जो हमारे माइंड में अब होना चाहिए, लास्ट क्लास वाज डेडिकेटेड टू द बेसिक टर्मिनोलॉजीज एंड इफ यू लुक एट इट, every child in the class knows what is this E. What is E? EMF. You represent this by a combo like this, right? Big and small, this is positive and negative. And any cell which is doing its normal job, what is the job of a cell? It is to give you the energy. And if it is supplying you the energy, you will assume that the current is coming out of positive, going to some load, and then coming back inside the cell. But when the cell is getting charged by some other source, then the current will go inside the cell, that will enter from positive, right? अभी इसमें ये एनर्जी दे रहा है, उस केस में एनर्जी ले रहा होगा, राइट? तो उसका जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो ईएमएफ से ज़्यादा होगा. और टर्मिनल वोल्टेज हम किसे कहते हैं? आप कहेंगे टर्मिनल वोल्टेज वो होता है जो टर्मिनल्स पे मिलता है. हर सेल का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस आर होता है. तो जब करंट ये देता है तो कुछ यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है, प्लस माइनस. सो व्हाट यू एक्चुअली गेट एट द टर्मिनल्स इज ई माइनस आई आर, दैट इज टर्मिनल वोल्टेज वी, that is supplied to this fellow V equal to IR. So what the load actually gets from the battery is not the EMF, it gets terminal voltage, because what is available in the terminal, only that much you can give to the load, right? Okay. Then we discuss some basics कि R किस बात पे depend करता है. You will be able to recall all that. आज हम लोग कर रहे हैं एक बहुत important derivation से शुरू कर रहे हैं हम लोग. इसमें हम काफ़ी सारी properties derive करेंगे. We'll be deriving the drift velocity, then we will be talking about resistivity, conductivity, resistance, current, and then lastly about mobility. So all these parameters we have to develop from fundamental properties of electrons, that is its mass, its velocity and other things, right? तो देखिए सबसे पहली बात जिस पे हमें अपना attention focus करना चाहिए कि कंडक्टर है क्या? What is a conductor? So conductor basically is different from insulators and semiconductor in which regard कि जो conductor होता है, in the conductor you have plenty of free electrons, right? And these free electrons are not excess electrons, इनके proton अंदर ही मौजूद हैं. तो any electric carrying current carrying conductor is by default neutral. उसमें number of proton और electron हमेशा बराबर होते हैं, right? लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अपने न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड नहीं है, क्योंकि फील्ड स्ट्रक्चर नहीं है तो ये टाइटली बाउंड नहीं है. तो आप इसे फील्ड का प्रोवोकेशन प्रोवाइड करके एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के थ्रू मूव करा सकते हैं. सो इन दैट सेंस दे आर फ्री टू मूव अबाउट. इन दैट सेंस दे आर फ्री, दे आर नॉट एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स. ओके. और ये क्योंकि रूम टेम्परेचर पे हैं तो ये रेस्ट में नहीं होते, दे कीप ऑन मूविंग with a speed called thermal speed, right? और ये thermal speed देखिए वही है जो heat and thermodynamics में आप पढ़ते हैं, that is RMS speed आप निकालते हैं √3 kT by m, where k is Boltzmann constant, T is the temperature and m is the mass of the particle. So if you put all these values, you will get around 10 to the power of 5 meter per second is the thermal speed of electrons. So these electrons which are there in the conductor are doing this random motion. They are just wandering about with a speed of the order of 10 to the power 5 meter per second. Such a high speed. But if you talk about the velocity is a vector taken in a specific direction for a large number of electrons. If you average it out, you get a zero. Because if you take instantaneous velocity average of large number of electron, some electron may be going towards upward direction, some may be going towards downward. You know, any vector which is randomly distributed 360 degree for a large number will always result in zero. It will always result in zero over 360 degree. So these electrons are moving, but they are not moving in a specific direction. They are just going here, there, helter-skelter, they are moving. Okay. So these speeds are of thermal speeds. But if I take the instantaneous speed of everything in with the direction and average it out, then u vector, velocity vector for large number of electrons, v1 plus v2 plus v3 and so on, vn by n will be equal to 0. Okay. So there is no specific direction associated with the electron movement. This is a chaotic movement. Okay. So it's like Brownian motion. ठीक है.
गैस में जैसे मॉलिक्यूल वॉन्डर अबाउट करते रहते हैं वैसे ये भी इलेक्ट्रॉन भी इसमें जस्ट हेल्टर स्केल्टर मूव कर रहे हैं, लेकिन किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं जा रहे, राइट। अब हम एक काम करते हैं कि हम इस कंडक्टर के अक्रॉस एक वोल्टेज लगा देते हैं. We apply a voltage across this. Let us call this voltage as V. This is an ideal battery, so E and V are equal. So I just put this V across this. Let me take the length of the conductor as L, and let me take the cross section area of this conductor as A. So L is the length of this conductor, A is the cross sectional area of this conductor, right? And now we say the moment you apply this V, you have created a potential difference between these two ends. Let us name them. This end is S starting, and let us say this end is P. So S to P, you have created a potential difference. And now you know potential difference agar cause hoga to iska effect kya hoga? There will be a current flow. There will be a current flow. And how will the current flow? That we will see. लेकिन करंट फ्लो का जो रूट कॉज है, आपने कहा वो पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है? तो आप देखिए, ये जो वोल्टेज आपने लगाई है, इसके कारण क्या होगा? एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल डेवलप, राइट? एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल आर रिलेटेड बाय द रिलेशन E is equal to V by D. Actually, when we talk about potential, E is equal to minus dV by dr, or E cos theta is equal to minus dV by dr. So potential, if voltage is constant, for the time being, just know that electric field between these two will be the voltage, the potential difference divided by the length, L. Okay? So this is electric field. Now you may well argue, you may say, you always said field inside a conductor is zero, but today you are saying that there is a field, and under the influence of field these electrons are moving. I would say yes, in electrostatics I said field inside the conductor is zero, and I still maintain that, because in electrostatic the charges are at rest. They cannot go any further. They will just go to the surface and inside field would be zero. But if you provide a pathway, right, if this was some charge conductor, so at the most what would have happened to the electron? Where they could have come? They could have come at the surface. They could not have gone any further. But now you are providing them a path to flow. So what will happen? These electrons will indeed flow now, right? So they will begin to move, but they are moving under the influence of this electric field E. Okay? Now, this is not so simple that they start moving and they reach this end. There is a problem. The problem is the number density of electrons, that is number of free electrons per unit volume in a conductor is a order of 20 to the power 29. This is a large number, right? अब जिनके ये फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, राइट, इनके जो पैरेंट एटम हैं वो लेटिस आयंस कहलाएंगे. क्यों? इफ इलेक्ट्रॉन बिगिंस टू मूव फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द पैरेंट एटम, दैट एटम नाउ वुड बिकम अ पॉजिटिव आयन. I am not saying that the conductor would become charged. It will not. Why will it not become charged? Because the parent proton is there in the same conductor. So charging नहीं हुई है, सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन क्या किया है? Move किया है, right? If electron moves, these lattice ions of the order of 10 to the power 29 are present. अब क्या होगा? देखिए, ये इलेक्ट्रॉन कहीं ऐसे जा रहा था, and you switched on the electric field, right? So what will happen now? Instead of going like this will feel attraction towards this direction, and this will start moving. But what will happen? This will collide with the atom. Again it will start, because of the attraction it will collide again, and then again it will start and collide again. So this will be a subsequent process of collision of these electrons with the lattice ions. आपने मीन फ्री पाथ की बात पढ़ी है. मीन फ्री पाथ क्या होता है? मीन फ्री पाथ गैस मॉलिक्यूल्स में होता है. आप एक कोलिशन और दूसरी कोलिशन के बीच जो डिस्टेंस चलते हैं उसका जो एवरेज होता है, दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ. सिमिलरली जो टाइम सब्सिक्वेंट कोलिशन के बीच लगता है, वन कोलिशन टू सेकंड कोलिशन, इफ स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हियर with my eyes closed and I collide with a bench, you measure that time. Again I start collide with that bench, then I collide with you, and then collide with the wall. So whatever time I am able to travel between successive collision, large number of those collisions you observe, and then you take the long term average of this for a large number of electrons, you get average relaxation time, and we are denoting this by a symbol tau. Mean free path क्या है?
जितना डिस्टेंस आप चलते हैं उसका एवरेज, वो क्या कहलाता है? मीन फ्री पाथ। एक टक्कर और दूसरे टक्कर के बीच जो समय लगता है उस समय का जो एवरेज होता है वो क्या कहलाता है? रिलैक्सेशन टाइम। तो ये टाउ जो हमने डिनोट किया है, दिस इज टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3, एंड इफ दे टेक n collisions which are large number, this is called tau n. Now let us start our calculation under the light of these data which we have put here in the place. The first thing we will talk about is drift velocity. Drift velocity. हम लोग एक बात जानते हैं, v is equal to u plus 80. u plus 80. Now what is acceleration equal to? आप पहले बताएं कि what is the force on an electron? आप कहेंगे electron is negatively charged, so charge is minus E, and the field is this one, E. So the electric field is E. So this is the force on an electron. So what is the acceleration of the electron? You will say that will be minus E divided by m. अब पहली बात आप ये समझ लें, एक्सेलरेशन एक वेक्टर है और फील्ड भी एक वेक्टर है। तो पहली बात जो समझ में आए कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कौन सा है? ऑपोजिट टू दैट ऑफ द फील्ड. हाउ इज द फील्ड इन दिस कंडक्टर? द फील्ड इज फ्रॉम S to P, because this terminal is positive and this is negative, so you have an electric field in this direction. But in which direction is the electron experiencing force? Opposite to that. So that is P to S. So this is the direction in which the electron is experiencing force, right? इस डायरेक्शन में इस पे इंस्टेंटेनियस फोर्स लग रहा है और ये इसका एक्सेलरेशन है। तो अगर हम ये वैल्यूज यहाँ प्लग इन करें तो आप कहेंगे ठीक है, ये जो v है इसको हम लिख रहे हैं v sub d, this we are calling drift velocity. You have taken large number of electrons and their average, you have seen the instantaneous average is equal to 0 because random direction है, so this term is equal to 0 minus E by m, this is the acceleration part, and time you have taken as tau, that is average relaxation time tau. Okay, so I get my first formula, that is drift velocity is minus E tau divided by m with E vector, right? So this is the first formula. अब इसका नाम है drift velocity. अब कुछ basic question जो हम अपने आप से पूछ लें कि हम इसे drift क्यों कह रहे हैं? Why don't we simply say electron velocity or something like this? Why do we use this word drift? Because if you put the numbers, this E is 1.6 into 10 to the power minus 19 and this m is 9.1 into 10 to the power minus 31. The electric field and tau, if all this you put in place, you will get the order approximately 10 to the power minus 4 meter per second. And this is hardly any speed at all, 0.1 millimeter per second. अगर ये इतनी कम है तो it is appropriate to call this drift. Drift क्या होता है? To move along very, very slowly. So we say the electrons are drifting. They are drifting from which end? They are going from P end to the S end, right? P to S. This is the direction in which the electrons are flowing, right? They are moving. The electrons are moving from here to here, opposite to electric field. और ये आप देखिए drift velocity का जो direction है ये vector का, वो किसके opposite है? E के opposite है. So VD is in direction, is opposite to E in direction. Okay. अब देखिए कहाँ तो आप मूव कर रहे थे 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड से और कहाँ आप आ गए 10 to the power minus 4 मीटर पर सेकंड पे. There is a drastic reduction. Now few questions may come in our mind. हम ये सोच सकते हैं कि once we switch on a tube light, the light comes on almost instantaneously, है ना? If I switch on something here and let us say that light is 10 meter from here, then what will happen? It should take time. कितना? अगर 0.1 millimeter के स्पीड से आप मूव कर रहे हैं and the distance I said is 10 meter, that means 10 to the power 4 millimeter. So if you put everything in 10 to the power 3 millimeter, so and 10 multiply 10 to the power 4, so if you put these values, the number will be in hours. आपको घंटे लगेंगे 8 से 10 घंटे for that electron to move to that particular.
So if you want the light tomorrow, you should switch on it, light today and go. लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली लाइट ऑन हो जाती है. इसका रीजन क्या है कि ये नहीं है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जब इधर क्रॉस करेगा तब लाइट ऑन होगी. जैसे ही आप फील्ड लगाते हैं, राइट, अब फील्ड सेटअप होने में जो टाइम लगेगा, फील्ड सेटअप होने में कितना वक्त लगेगा, आप कहेंगे इस L डिस्टेंस में फील्ड सेटअप होनी है, और जो फील्ड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से सेटअप होती है, तो L डिवाइडेड बाय 3 into 10 to the power 8 meter per second. This is in meter, so this is 10 meter, so you say the time taken will be 0.3 microsecond. This much time only will be taken for electric field to set up, and that's all, right? The moment this happens, the flow will start. It is about initiation of flow. It is not about this electron moving to this particular point. Now the second thing is, यहाँ पर कई लोग 2 लिखते हैं. Good books, some good books are taking 2 here. Okay, S equal to UT plus 1 by 2 AT square they use. And if you use that formula and take S to be L, okay, and then you take U to be 0, and then 1 by 2 AT square, you know you will get a 2 term additional. Okay, so that is not appropriate, because you are not talking about instantaneous velocity of a single electron. You are talking about a large number of electrons average instantaneous velocity. Average instantaneous velocity of a large number of electrons. You are taking that into consideration. If you are taking that into consideration, it is more appropriate to use instantaneous velocity of a large number. You are not talking about average of 1. इसका ये average क्या हुआ, वो नहीं है. VD is equal to E tau, और आप इसको अगर यूज करेंगे तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आएगा. ओके, सो दिस इज व्हाट वी विल बी यूजिंग, एंड दिस इज व्हाट 2 का जो टर्म एडिशनल है वी आर नॉट टेकिंग इनटू, और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन करेक्ट एक्सप्रेशन विल बी टेकिंग दिस एज एक्सप्रेशन. अब 2-3 बातें और जो हम समझ सकते हैं वो ये हैं कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई है, और किसी वायर में आपने देखा है कि अगर वायर में बेंड्स हों तो करंट के फ्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाइप में बेंड हो तो वाटर के फ्लो में बहुत फर्क पड़ जाता है. ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन ये है मेरा आपसे कि इफ देयर इज अ पाइप एंड द पाइप इज बेंट लाइक दिस, देन यू नो द वाटर फ्लो विल गेट इंपीडेड. यू आर वाटरिंग योर गार्डन, और अगर बीच में ट्विस्ट आ जाए पाइप में तो आपको पता है कि फ्लो जो होता है वो क्या होता है, काफी इंटरप्ट हो जाता है. लेकिन जो आपका वायर है, चाहे वो कितना भी आप उसे क्रम्पल कर दें, उसमें करंट का फ्लो उसके कारण इंपीड नहीं होता. क्यों? इलेक्ट्रॉन बात वो नहीं है, बात यह है कि इलेक्ट्रॉन बहुत कम स्पीड से चल रहे हैं. नाउ थिंक अबाउट अ मोटरसाइकिल मूविंग विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, और अ साइक्लिस्ट मूविंग विद 20 किलोमीटर पर आवर. नाउ दैट पर्सन व्हेन ही नेगोशिएट्स अ टर्न, he has to bend down in order to get the necessary centripetal force. Have you seen a person walking on the road bending like this to take a turn? No, because the speed will be very small, right? Speed will be so small कि वो negotiation of turn में आप कितना भी bend कर दीजिए, इतना धीरे चल रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, right? और water molecules के बीच adhesion का और इसके बीच कोई chaotic movement का उससे लेना देना नहीं. It is about drifting, which is very slow. Okay, let us calculate the next possible parameter. Let us be talking about current. The first result is in place, and I will put all these results here. I will compile it here. तो पहला result मेरे पास आ गया है. V drift is equal to minus E tau divided by M. Right? Can I rub off the right side? No? या कौन सा वाला? ये वाला. मैंने आपसे ये कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं. तो अगर L मीटर का डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होनी है तो स्पीड ऑफ लाइट होती है c, दैट इज 3 into 10 to the power 8. तो टाइम टेकन जो होगा वो L डिवाइडेड बाय 3 into 10 to the power 8 होगा. वो एक बहुत ही छोटा नंबर होगा. और ये समझा के मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि कितना भी लंबा वायर हो, आप उसे ऑन करते हैं तो ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली करंट फ्लो शुरू हो जाती है. टाइम लगता है, थ्योरेटिकली टाइम लगता है कितना? L divided by 3 into 10 to the power 8. If they are telling you 1 kilometer long wire, one end the bulb is connected, one end you switch on the supply,
how much time will it take? You will say 1 kilometer, that is 10 to the power 3 divided by 3 into 10 to the power 8. Still it will be negligibly small. So we ignore it. But theoretically, yes, that limit will be posed by the distance, right? Okay? Is that okay? Right. Can I? Next thing, of course, is current. So current थी क्या, याद करिए, what was current? Rate of flow of charge. और average current क्या थी? Total charge by total time. So what is the total charge? Let us try to get that in place. देखिए, what is the number of electron per unit volume? वो हमारे पास हमने लिखा था, कितना था? That was n. N was number of electrons per unit volume. ये किसको हम कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है? n. इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है a और इसकी लेंथ है l. तो इसका वॉल्यूम कितना है? al. और हमने कहा कि नंबर है n पर यूनिट वॉल्यूम. तो इस टोटल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? आप कहेंगे दैट इज सिंपल, n into a into l. This will be the total number of electrons available in the given volume. And what is the charge on each? You will say the charge on each is minus E. And how much time does it take on the average for an electron to reach this distance? You will say that will be, we know time is equal to distance upon speed. So distance here is L and the speed here is Vd. Right? Distance and Vd. So this L and L I can lose and I get I is equal to minus Vd ENA. Now current is a scalar. Why is current a scalar? Because it does not follow the parallelogram law of addition. Okay, that is why it is scalar. For a scalar quantity, this minus does not make sense. But why did not I remove it at the first go? देखिए, मैं पहले ये बात ये समझाना चाहता हूं कि I is minus Vd. Drift velocity इलेक्ट्रॉन की किस डायरेक्शन में थी? This was from P to S. And this current is minus of Vd. So the current is from S to P. And this current we say is conventional current. This is conventional current, right? So conventional current will be interested only in the magnitude. So we will say Vd ENA. So this is the current that flows from one end to another. And if you look at it this way, it only tells you that the direction of the current flow will be in the direction opposite to drift velocity, and drift velocity itself is opposite to what? It is opposite to electric field. Is that clear? So itni current flow hoti hai. I is equal to V drift into ENA in magnitude. I is equal to Vd ENA. You can remember V now. Next, there is a famous law that you and I know about, Ohm's law, right? Ohm's law क्या कहता है? Ohm's law कहता है I is equal to V over R. अब मैं एक काम करूंगा कि ये जो I मेरे पास है, इसमें Vd की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा by asking you. So let us see what we get. I equal to Vd. What is Vd equal to in magnitude? Because we have taken only the magnitude. कितना हो गया? Minus को छोड़िए. E tau divided by M. And if you are so fond of taking vector, then you please take this minus also, and that minus and minus will make each other plus. Don't worry. So E tau, ye, then there is a E term, N term, A term. Okay, E tau, E and A. So this is what it is. Besides that, V by R में ये आपने कहा कि E की वैल्यू हमने डाल दी है, N की वैल्यू आपके पास है, A की वैल्यू आपके पास में अवेलेबल है. अब E खुद क्या है वो हमने यहाँ निकाल के रखा है. E is equal to V by L. So I get I is equal to, देखिए N, E और E कितना हो गया? E square tau A divided by M, ऊपर आ जाएगा V by L. Now look at this last arrangement. I equal to, I'm just arranging it, doing nothing, V divided by N E square tau A divided by M L.
Now look at this equation and this equation. I, V. So what is this term must be equal to? R. So the resistance of the conductor is given as N E square tau A divided by ml. What is N? Number of electrons per unit volume. What is E? Charge on electron. Can you do anything about the charge on electron? Sorry, we can't. This tau is relaxation time. This A is the cross-sectional area. M is the mass of electron. Can you do anything about the mass of electron? No, you can't. And L is the length of the conductor. Okay? Now, right from childhood, आपको एक बात पता है कि R basically depends on what? Length and area. So what is the formula you get? R is equal to rho L by A. And now I want you to compare that result. R is equal to NE square tau A. R is equal to rho L divided by A. हमारे पास result क्या है यहाँ पे? क्या कर दिया? R उल्टा है, ठीक है. ये हो गया M के नीचे L आएगा ML divided by ये यहाँ पे गलती करी है मैंने I में E tau by M. ओके ठीक है, ये तो ठीक था. NE square tau A divided by ML. तो यहाँ पर this will be ML divided by NE square tau A. ठीक है, please correct it. This is ML divided by NE square tau A. Let us take this. We would have caught it. अभी हमको पता चल ही जाता, क्यों? क्योंकि जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करते तो रो एल जब आर की वैल्यू में वहां से देखता तो मुझे मिलना चाहिए था एम एल डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ ए. एल बाय ए, तो ये पूरी टर्म क्या होनी चाहिए? दिस टर्म शुड बी रो. सो रो इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ. ओके, रो इज व्हाट? रेजिस्टिविटी. इट इज रेजिस्टिविटी, जिसको आप क्या बोलते हैं? कई बार आप कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. और इसकी वैल्यू जो होती है वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है. जो कंडक्टर हैं उनके लिए ये रो का ऑर्डर होता है 10 to the power -8. जो अलॉयज हैं उनके लिए है 10 to the power -6. जो आपके इंसुलेटर्स हैं 10 to the power 16 to 10 to the power 22. सो उनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई है. ओके, सो दैट इज द डिफरेंस. रेजिस्टिविटी basically is a property of a material, right? It depends on the nature of the material. It does not depend on length and area. You can see there is no length here, there is no area here. So resistivity is independent of physical dimensions, but resistance is dependent on physical dimensions. अब resistivity किन किन बात पे depend करेगी? We will talk about that. But first let us write one more expression. That is reciprocal of resistivity in physics is called conductivity, sigma. The sigma is 1 by rho, so that is NE square tau divided by A. NE square tau divided by A. So this is your rho that we call conductivity. Okay. Next, yes, anything? मैंने ये कहा कि यहां से लेके यहां तक सब जगह इलेक्ट्रॉन है. हम इस इलेक्ट्रॉन के वहां पहुंचने का इंतजार नहीं करेंगे. जैसे ही हम फील्ड को ऑन करते हैं इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट शुरू हो जाती है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वो जो उस फिलामेंट में वहां मौजूद है दैट हैज बिगिन टू ड्रिफ्ट नाउ. और यहां वाले ने भी ड्रिफ्ट शुरू कर दिए. द जर्नी हैज स्टार्टेड. ओके, द काउंटडाउन हैज बिगन. सो यू डोंट वेट फॉर दिस इलेक्ट्रॉन टू रीच देयर, because when we are doing that calculation 10 divided by 0.1 precisely what we are doing, we are waiting for this electron to reach there. इस इलेक्ट्रॉन के वहां पहुंचने की बात नहीं है, फ्लो के शुरू होने की बात. किसका?
हम यही तो कह रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी नहीं है ये सारा कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ पर से दिस इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रॉन जब वहां पहुंचेगा तब वो ऐसा होगा। जैसे ही ड्रिफ्ट शुरू हो जाएगा कंडक्टर में, वी से द करंट इज इनिशिएटेड एंड द थिंग्स विल कम ऑन। इज दैट क्लियर? थिंक अबाउट अ पाइप विच इज कैरिंग वाटर। सो तो फिल्टर हाउस से जो पानी हमारे घर में आता है तो हमें ये इंतजार थोड़ी कि वो मेरे घर के लिए बना है, कोई भी जो उस पाइप में है मूव करके आता है तो फ्लो हैज स्टार्टेड। दैट्स व्हाट इज द पॉइंट, है ना। मैंने ये समझाने की कोशिश की थी, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप देखिए बोर्ड वगैरह में बहुत बार आता है आपके, कि जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी कम होती है तो फिर बल्ब को ऑन होने में, ट्यूबलाइट को ऑन होने में, फैन को ऑन होने में इतना कम टाइम क्यों लगता है? तो आप कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन द मोमेंट द फील्ड इज सेट अप, the flow starts, the current flow starts, and it is the current flow that constitutes the light. It is not that this electron reaching there will do that. Is that okay? Two more parameters we have to put in place before we put a stop to this. The next parameter is current density. मैं introduce कर दूं कि क्या होती है current density, right? First thing we know, current is a scalar. It's a scalar quantity. But current density is a vector quantity and it is denoted by J. But first let us understand what current density is. देखिए कोई भी कंडक्टर है ना, कोई भी कंडक्टर है, उसमें अगर करंट कुछ फ्लो हो रही है, करंट कुछ फ्लो हो रही है I, in which direction? If it is flowing in the direction normal to the conductor, that is in the direction of area vector, very fine. But if the current is going in some other direction and the area vector is pointing in this direction, then you have to take the component of area vector in the direction of the current. So it is a characteristic property of a point which is J is equal to I divided by A cosine theta. A क्या है यहाँ? A is the area and you have to take the component of that in direction perpendicular. That is जो area vector है उसके डायरेक्शन में करंट लीजिए या करंट के डायरेक्शन में एरिया का कंपोनेंट लीजिए. सो इफ यू राइट इट, आई विल बिकम इक्वल टू जे ए कोसाइन थीटा. और आप सबको पता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी गिव्स यू व्हाट? ए बी कोस थीटा. सो आई बेसिकली इज व्हाट? इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ जे एंड ए. जे क्या है? करंट डेंसिटी, और ए क्या है? एरिया वेक्टर. तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको क्या देता है? करंट देता है, राइट? ये तो है, लेकिन फॉर नॉर्मल पर्पसेस हम कहेंगे करंट और एरिया वेक्टर जनरली पैरेलल होते हैं. तो अगर इनके बीच का एंगल, बीच का थीटा 0 डिग्री हो तो J विल बी इक्वल टू I अपॉन A, करंट पर यूनिट एरिया, है ना. जैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या थी? Q डिवाइडेड बाय एरिया. वैसे ही करंट डेंसिटी क्या है? करंट डेंसिटी इज I डिवाइडेड बाय एरिया. बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्लो, एंड flow is taking place in a direction other than the normal to the conductor, then you have to take the component of area vector. This is something which is different and new here. So J dot A. So J is equal to I by A for all practical purposes. So help me out. J is equal to I by A में let us plug in I. I कितना है? I is equal to VD E N A. So this is VD E N A. और अगर वेक्टर है तो मैं थोड़ा सा I take the liberty of putting a minus here and that vector there, okay, and then divided by what? A. So A and A I can lose very easily. Now please put VD with proper vector sign. So what do we get? J is equal to minus, and then that fellow is minus E tau divided by M into E into N. So now you look at it, N, E and E. So I get J is equal to N E square tau divided by M, and then E minus and minus have become plus. This is our friend. कौन है ये? This is sigma. So J becomes equal to sigma E. J becomes equal to sigma E, and this is called vector form of Ohm's law. Vector form of Ohm's law. If you look at Ohm's law for current, this comes out to be I is equal to V into 1 by R. This is what it is. Or you can say I is equal to V into G, where G will be conductance, that is reciprocal of the resistance. But when you look at this,
you say J is equal to sigma E. J is current density, sigma is conductivity, and E is electric field. The last parameter I would do, that is called mobility. Okay, and what is mobility? Mobility basically is ratio. It is a ratio of drift velocity and electric field. So mobility is given as symbol mu, that is drift velocity divided by electric field. So if you put the values E tau divided by M and E, you lose E and E, you get mu equal to E tau divided by M. Okay, so I got two more values here, J equal to sigma E vector form, and then mu is equal to E tau divided by M. So these 7 parameters we have calculated by studying the motion of the free electrons under the influence of electric field. And who creates the electric field? Potential difference that is applied by you across the terminals of this cell. Is that okay? So what is the qualitative definition of mobility? Qualitative definition is how agile is a carrier. If the mass of the carrier is more, it would be less agile, and if the mass of the carrier is less, it will be more agile. And by agile, what do you mean? How responsive it is. If the mass is less, mobility will be more. If something is more mobile, it is very ready, promptly, ready to move. Whereas something is less agile, very sluggish, it will move sluggishly. When you read semiconductors, you will be comparing the mobility of electron with holes, and there we will say holes are sluggish and electrons, they move fast. अच्छा, ions move करते हैं, बैटरी के अंदर ion move करते हैं. Ion क्या होते हैं? They are having heavier mass. If they are heavier mass, their mobility will be less. Electrons are light mass, their mobility will be more. And mobility का मतलब वही है, how mobile is the carrier, how easily it moves, how swiftly it moves. That's all. हो गया जी? Okay. Now, let us focus on one property that we have derived, that is resistance. है ना? इसके बारे में थोड़ी बात शुरू करते हैं कि resistance आपको मिला है कुछ इस तरह, R is equal to ml divided by ne square tau a. तो आप किसी दिन भी देख सकते हैं कि resistance length के directly proportional है और resistance area के inversely proportional. ओके, अगर एक को कांस्टेंट रखें तो दूसरे के लिए. लेकिन अब मैं आपसे एक छोटी सी चीज डिस्कस करना चाहता हूं. आई हैव विथ मी अ पीस ऑफ वायर. ये एक वायर है किसी मटेरियल की, लेटर से एल्यूमिनियम. ओके, और इसका रेजिस्टेंस R है. ओके, एंड नाउ व्हाट आई डू इज आई पुल दिस वायर and I make its length n times. 2 times, 3 times, 4 times, or n times. What will be the new resistance? R? Okay. 3 रिजल्ट मैं बोलूंगा, प्रूव भी करूंगा. प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए. एक वायर की जगह आप nl लेंथ की वायर लें तो इसमें कोई डाउट नहीं है
कि अगर इसका रेजिस्टेंस R है और आप एक नई वायर लें जिसका लेंथ NL हो तो उसका रेजिस्टेंस NR होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर इस वायर को खींच के मैंने इसका लेंथ N टाइम्स कर दिया है, सो इफ द लेंथ is increased n times, then the resistance will increase n square times, right? So new resistance will be n square R. Why? Please pay attention. What would not change? Will the density of material change? Will the mass of material change? No. Will the volume of the material change? No. So if the volume doesn't change, area earlier, length earlier is equal to area new, that is A prime, into new length, that is NL. So L I can lose with L, and the new area will be A divided by N. Okay? So the increase in length has actually reduced the area by a factor of N. And the new resistance R prime, rho to rho ही रहेगा, L हो गया है N L, and area has become A and N. So this whole term you know is N. So R prime is equal to N square R. Please pay attention to the last word that I am saying. Nothing will change with resistivity. You pull a wire, make it N times. Resistance will become N square, but the resistivity will not change. Why? Because the resistivity does not depend on physical dimensions. It depends on temperature. It depends on other factors, but it does not depend on length and area. You take a 1 meter wire or 1 kilometer wire of something, the resistivity is not a function of length and area. Okay, so that is first thing. यहाँ जो दूसरा result मैं आपसे discuss करना चाहता हूँ, which I think you will be able to tell me with common sense itself, and that result is, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें मैंने इस wire को, इसको area जो था, ये मैंने change कर दिया. I make the area double. What happens now? If A is doubled without changing volume, okay, if you make it, let us say double की जगह A is made NA, that is increase N times, then the new resistance will be equal to R by N square. Naturally, let us prove it. देखिए, वॉल्यूम वही रहा है, तो आप कहेंगे A into L पहले था, जब रेजिस्टेंस था कितना, रो L पाए A, लेकिन अभी ये कितना हो गया, नया एरिया A, N A, लेकिन लेंथ है L प्राइम. ओके, सो A से A कट गया, L प्राइम कितनी आ गई, L by N. If you plug in now for R prime, रो रो रहेगा, लेंथ हो जाएगी L by N, और एरिया आपने कहा था NA. ये आपका दोस्त है, कौन है ये, R. तो R prime is equal to R by N square. Now tell me, if radius is made N times, what would be the new resistance? N to the power 4, because everybody knows cross-sectional area pi r square. Okay, so N square का square will give you N to the power 4. क्या बोला हमने, एक मिनट में रिवाइज कर लें फटाफट. क्या बोला, अगर लेंथ को वॉल्यूम चेंज किए बिना, लेंथ 2 minutes, I will just talk about this non-ohmic and ohmic conductors. What we mean by non-ohmic conductor and ohmic conductor, इसके बारे में हम बात करते हैं. दोनों में क्या फर्क होता है? Mostly people will say the same thing. One which follows Ohm's law is ohmic, and which doesn't follow Ohm's law is non-ohmic. Very good. It is not like that. The point is this. Ohm's law कहता है V is directly proportional to I, so you get a curve like this which passes through the origin, and V is proportional to I. This is what is the curve you get for a
ohmic resistance. In non-ohmic resistance, V equal to IR is valid for every small section, but it is not valid for the whole range of operation. If you think about a diode, the curve comes out like this. This is V and this is I. लेकिन इसी आपका प्रैक्टिकल है, आप करते हैं, लेकिन यहां पर आपको कहा जाता है डायनामिक रेजिस्टेंस निकालो, तो आप क्या करते हैं, डेल्टा V बाय डेल्टा I, यहां से क्या लिखते हो, R is equal to डेल्टा V बाय डेल्टा I. ये भी तो ओम्स लॉ है, but Ohm's law is valid for this small section which can be taken as a straight line, but it is not valid for the whole range of operation, right? Think about a voltmeter, not voltmeter, voltmeter. Voltmeter का ग्राफ ऐसा आता है, VI ग्राफ, यहां तक तो जीरो, अब यहां से शुरू हुआ, तो ये ओमिक है? नहीं है, राइट? गैलियम आर्सेनाइड एक सेमीकंडक्टर है, इसका VI ग्राफ कुछ ऐसा आता है, क्या ये ओमिक है? नहीं है, नहीं है. एक टॉर्च का बल्ब, एक इनकैंडेसेंट लैंप, क्या ये ओमिक है? नहीं है. क्यों? क्योंकि इनका टेम्परेचर के साथ में क्या होगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा. अगर आप इस लाइन की बात कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि यहां पे स्लोप क्या है, कांस्टेंट है थ्रू आउट द रेंज ऑफ ऑपरेशन, लेकिन यहां पर स्लोप अलग अलग आएगा, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग आएगा, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग आएगा, अलग अलग पॉइंट पे. तो नॉन ओमिक कंडक्टर वो कंडक्टर होते हैं जिनका रेजिस्टेंस चेंज होता है अलग अलग जोन के लिए, राइट? द कंडक्टर्स which follow Ohm's law over complete range of operation are called ohmic conductors. And the ones over complete range of operation are called ohmic conductors, and the ones for which the VI graph is not of constant slope and passing through origin are called non-ohmic. Last word, full stop लगा के. For a small section of VI graph, the dynamic resistance can be found by using Ohm's law. ओके, वी कंटिन्यू टुमारो. टेम्परेचर की बात करेंगे, टेम्परेचर कैसे इन्फ्लुएंस करता है. विल टॉक अबाउट सुपर कंडक्टिविटी, एंड इफ टाइम परमिट्स विल बी टॉकिंग अबाउट किरचॉफ्स लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट. थैंक यू.